Now construction of triangles. Triangles में we have read the congruency criterion SSS, SAS, ASA and right hand side triangles. So first we will learn how to construct a triangle using SSS, that is side criterion. Suppose we have to draw a triangle called ABC. You have been given the measurements of all three sides. What you have to do generally when we draw a triangle ABC, BC is the base. So suppose let us consider we get a base BC. Place your ruler and ruler में exactly 6.2 measure करके you have to point two dots at B and C and you get a base BC 6.2 centimeter. Now using your compass and scale, आप जैसे measurement measure करते हैं compass and scale में, suppose you have to measure 5 centimeter, so you will extend your compass and you will measure it here as 5 centimeter. See, this is 5 centimeter, right? So you have to see AB is 5 centimeter. We have drawn BC using ruler. Now how do you make AB? AB हमें एक point का पता नहीं है. We know where is B. So B पे हम compass रख के we will make a fine arc. Right? B पे compass रख के हमने 5 centimeter measure कर लिया है. Will make a fine arc here. Then हमें AC का measurement पता है. We know the point C. AC is 4.3 centimeter. Again by using ruler and compass you will measure 4.3 centimeter. And then place your compass at point C because you are looking for A. आपको A नहीं पता है A कहाँ पर है. आपको B का पता है, so A B की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर पता थी. रूलर से आपने मेजर किया एंड आपने आर्क कट किया. सिमिलरली ए सी की वैल्यू पता है 4.3 सेंटीमीटर, आपने रूलर से मेजर किया. सी पे रखा, आपने दूसरा आर्क कट किया ऑफ 4.3 सेंटीमीटर. वेर एवर दिस आर्क इज इंटरसेक्टिंग 5 सेंटीमीटर and 4.3 centimeter, that point will be A. And you can always verify by placing the scale whether AB is 5 centimeter or not. See, in this case it is exactly 5 centimeter. Next is SAS criterion. SAS criterion में what is given? Two sides are given and one angle is given. So side, angle, side is given. So आपने AB side 5 centimeter using ruler आपने बना लिया. Then you have to mark 60 degree. How will you mark 60 degree? Tell me. Your foot आपने यहाँ पे 5 centimeter बनाया. Then how are you going to mark 60 degree? Using protractor or you know how to make a 60 degree angle? So let's say we can do that. आपने AB 5 centimeter बनाया using your ruler. Yes, आपने AB 5 centimeter बनाया using your ruler. Then you measure AC is given 4.3 centimeter. So you measure 4.3 centimeter here. 4.3 centimeter measure किया. Place your pointer compass here and then mark 4.3 centimeter. Now I don't know where is it is. हमें तो line का पता नहीं है. We can randomly, where is the point C, we don't know. How will you make 60 degree? Using protractor or you know how to draw 60 degree? You know how to draw 60 degree. You will simply place, you have learnt it in class 6, you will simply place your compass, right? You will make an arc on this line, extend this line, extend this line. Yes, then you got AB 5 centimeter using ruler, then 4.3 centimeter using your compass and ruler. You place your compass here, mark 4.3 centimeter like this, a big arc you have to make. Then place your compass here with a random
रेडियस, अपने कंपास को रैंडम किसी भी रेडियस पे रखिए एंड मेक एन आर्क लाइक दिस. देन प्लेस योर कंपास हियर, मार्क एन आर्क हियर. ए बी के ऊपर ये वाला आर्क जहाँ पे कट कर रहा है एट दिस पॉइंट, प्लेस योर कंपास एट दिस पॉइंट एंड मार्क an arc here. You know how to construct 60 degree. You have learnt it in class 6. This is how you construct 60 degree. So you got this point and you have got 4.3 centimeter यहाँ पे. So extend these 2 points. यहाँ पे आपको 4.3 centimeter मिला and this is the angle. So angle you can extend it like this. 60 डिग्री एक्सटेंड किया पॉइंट ए से, एंड पॉइंट ए से जो पॉइंट आपका 4.3 सेंटीमीटर जहाँ पे आर्क कट रहा है दैट विल बी योर पॉइंट सी, एंड दैट्स हाउ यू गेट बी सी, राइट. देन ASA क्राइटेरियन, ASA में यू विल बी गिवन एंगल, साइड angle. So you have been given angle 60, angle 75 and side 4.8 centimeter. You have been given only one side. You draw BC, one side using ruler. Then at this point you know how to construct 60 degree. यहाँ पे compass रखा आपने, एक random radius लिया, you draw an arc. That arc will intersect line BC. Place your compass here, draw another arc. You will get angle 60 degree. Now angle 75 degree is C. C angle is 75 degree. How will you make 75 degree? You will first make 90 degree, that is perpendicular आपको बनाना आता है. That you place your compass here, a random radius you take, then from here extend your compass, make an arc. From here extend your compass, make an arc. You make 90 degree perpendicular line. 90 डिग्री आपने बनाया. यू नो हाउ टू मेक 60 डिग्री. 90 डिग्री को अगर आपने हाफ किया सो इट विल बिकम हाउ मच. सी, आपने यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाया, आपने यहाँ से 60 डिग्री बनाया. दिस इज 60 डिग्री. कैन यू सी हाउ टू गेट 75 डिग्री. आपने 90 डिग्री बनाया परपेंडिकुलर, आपने ये 60 डिग्री बनाया. दिस मच इज 60 डिग्री. सो नाउ यू नो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है यहाँ से यहाँ तक का. यू गेट 60 डिग्री. यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री. यू हैव मेड 90 डिग्री हियर, राइट. नाउ वॉट यू हैव टू डू इज, अगर ये 60 है और इतना 90 है, देन दिस मच इज 30 डिग्री. 30 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना आपको आता है. 30 डिग्री का बाइसेक्टर विल गिव यू 15 डिग्री. सो 60 प्लस 30 डिग्री का बाइसेक्टर 15 डिग्री विल मेक 75 डिग्री. 60 प्लस 15 विल मेक 75. So you construct a angle bisector of 30 degree. You have constructed angle bisector of 30 degree. Now it is extending. 60 degree is extending wherever these two lines are meeting. That line will be line A, point A.